5th November 2025 at Excel Physics IAL Unit 1, and we are solving questions on material, terminal velocity questions, upthrust questions. So let's start today's class with January 2021 question. The question is, I have a spherical polystyrene bead and it is immersed in oil. You are given the diameter of the bead and the bead is released and it is moving upward. It is not moving downward. It is moving upward. And if it is moving upward, then obviously three forces acting on the bead, three forces acting on the bead, you have to complete free body force diagram. Sir, upthrust always act upward. Sir, weight always act downward. Weight always act downward. If the bead is moving upward, if the bead is moving upward, then you know drag always opposite to the direction of motion. So drag will be downward. The length of drag always changes because it depends upon speed. So I cannot give you any suggestion for the length of drag. So weight always acting downward, upthrust always acting upward, drag always acting opposite to the direction of motion. As the object is moving upward, so drag will be downward. Okay. And now the first question. Show that upthrust is this. So I think we have solved too many questions. So I will suggest you do not copy my work. Solve yourself. And finally cross check your answer. So what did I do? So we are calculating upthrust. Then you know the equation of upthrust is rho g volume. Sir, we are not given volume. We are given diameter. So we should calculate first the volume of a sphere, and the volume of a sphere is 4 upon 3 pi r cube. R is the radius, or we are given diameter. So if you divide this diameter by 2, then it turns into radius with same exponent. And if you solve this equation, then obviously you can calculate the volume of the bead. And if you use calculator, then the answer will be 3.35 exponent minus 8 meter cube. This is the volume of bead. You should calculate yourself. And now finally I am calculating upthrust. Equation of upthrust is rho g v. So rho is the density of liquid, and the liquid is oil in this question. So the density of oil is beta 930, gravity is 9.8, and the volume of bead we have already calculated, it is 3.35 exponent minus 8. And if you solve this number, then obviously upthrust will be 3.1 एक्सपोनेंट -4। बेटा सुबह बिल्कुल अभी अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। क्वेश्चन का बेटा वेरिएंट है जनवरी 2021। फर्स्ट पार्ट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम के बाद काम की बात, दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट अपथ्रस्ट। इक्वेशन ऑफ अपथ्रस्ट इज रॉ जी वी, बट वी डू नॉट नो द वॉल्यूम, so first we calculate volume. First we calculated volume. Volume of a sphere, it is a spherical shape. So the volume of a sphere is 4 pi upon 3 r cube. So first we calculated volume, and using volume and density we have calculated upthrust. आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि अब आपको कॉपी नहीं करना चाहिए बेटा, खुद से सॉल्व करना चाहिए। And now the question, the next part is the Stokes law shows how the viscous drag on a sphere is related to its velocity through a fluid. Stokes law is only valid if the bead is moving sufficiently slowly.
the speed of the object should slow through the oil. The question is why the speed should be slow, and it is a 1 mark question. So the answer is, if the object moves slowly, then the flow will be laminar. Then the flow be laminar. And if the object or sphere moves at high speed, it produces turbulence. So in the marking scheme, the answer is, the reason for slow movement is so that flow should remain laminar. Okay, it is a simple question. But the difficult part is this, in which sometimes student thinks कि सर करना क्या है. ठीक है जी. तो पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, और रीड करके, ठीक है, रीड कीजिए बेटा पहले. और बेटा हमें जैनब आप सोच के बताइए कि व्हाट डू वी हैव टू डू, करना क्या है. जी बेटा जैनब, समझ में आती है बात कि हमने करना क्या है. सर वी विल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ bead through the oil. First we should calculate speed of bead through the oil. फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पीड आ गई, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्पीड आ गई 10. ऐसे ही अपने पास से लिख रहा हूँ, स्पीड हमने कैलकुलेट की, स्पीड आ गई 10. ठीक है. एंड देन वी विल कैलकुलेट वी आर. वी आर इज अ कांस्टेंट, इट इज नॉट अ टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज नॉट, इट इज नथिंग, इट इज अ नंबर. Consider this number is 12. Consider this number is 12. Then we will compare our calculated terminal velocity. If less than this VR number, then I will announce yes, Stokes law is valid. And if my calculated velocity is greater than VR, VR is just a number. It is not any fixed specific physical quantity, nothing. It is a number. We will calculate this number, and then we will calculate terminal velocity. If the terminal velocity or the speed of the bead, if it is less than VR, then Stokes law is valid. If it is greater than VR, then Stokes law is not valid. So this VR is nothing except a number. So we are going to calculate first the speed of bead through oil, number one. Then we will calculate a constant VR, number two. And then we will compare our calculated value is less than or greater than the value of VR. Okay. So you should calculate first the speed of bead. You should calculate the speed of bead. And how do you calculate speed of bead? You know the object or bead is moving upward. You know upthrust acting upward. Sir, upthrust acting upward, and weight and drag acting downward. Weight and drag acting downward. So first we are calculating speed of bead. So you can write a heading. So first we are calculating speed of bead. For speed of bead, we are starting our calculation. The calculation is, sir, upthrust acting upward, weight acting downward, drag opposite to the motion of opposite to the direction of motion. Sir, upthrust we have already calculated. Upthrust was 3.1 exponent minus 4. 3.1
exponent minus 4. We already know. But we do not know the weight of bead, but it is given. The weight of bead is given. The weight of bead is 1.5 exponent minus 5. It is given. So if I shift weight on the other side, it is minus 1.05 exponent minus 5. It is weight is equal to drag. You know, drag is 6 pi viscosity velocity into radius. So you should calculate speed. Do not copy. You should calculate yourself. So this 6 pi is shifted on the other side. It is 6 pi. Viscosity, sir, we are given viscosity. Viscosity is 4.9 exponent minus 2. We are given radius. No, no, sir, we are given diameter. So its half value will be radius. It is 2 exponent minus 3. 2 exponent minus 3. It is radius. Okay. So I have made velocity as a subject and all the numbers I have shifted on the other side, as well as if you subtract the numbers in numerator and then divide by this factor, then you can calculate velocity. Then you can calculate velocity. This number I think 2.96 exponent minus 4. And if you solve velocity, then the final answer of velocity is 1.6 exponent minus 1. 1.6 exponent minus 1 is the terminal velocity we have calculated. This velocity we have calculated by using Stokes law, by calculated upthrust, weight is given. So we have calculated terminal velocity. But this terminal velocity will be valid, Stokes law will be valid if this value is less than Vr. So now we are going to calculate Vr. Now we are going to calculate Vr. I am calculating Vr here. Sir, Vr is 10 times viscosity of oil. Sir, it is given 4.9 exponent minus 2. This is viscosity of oil. In denominator, viscosity of oil again, no, sorry, density of oil. Density of oil. Sir, in this page, we are not given density of oil. We are not given density of oil. Sir, density of oil is here. Density of oil is here, 930. Density of oil is 930. And diameter of bead is also given. It was 4 exponent minus 3. And if you calculate VR, then what is VR? VR value, you calculate yourself, do not copy. The value of VR is 1.32 exponent minus 1. And now compare exponent minus 1 in both numbers. So ignore it. So ignore it. And now you can see this 1.6 is less than 1. No, no, sir, no, no. 1.6 is greater. Okay. The velocity we have calculated, it is 1.6 and it is greater than 1.3, the value of VR. So it shows, sir, Stokes law cannot be applied. Stokes law cannot be applied. So it is just a practice. Although you know okay, how do we calculate upthrust, how do we calculate drag, we already know. But in this question, examiner confused us by giving this number. That is why Zainab could not decide कि सर हमें करना क्या है.
है ना बेटा जैनब, वरना अगर हम क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट टर्मिनल वेलोसिटी, तो फिर तो ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं इन विच वी हैव कैलकुलेटेड टर्मिनल वेलोसिटी। बट इन दिस क्वेश्चन दे गिव अस अ न्यू थिंग, कैलकुलेट वी आर एंड देन कंपेयर विद दिस वी आर एंड देन डिसाइड। तो क्वेश्चन में उसने घुमा दिया, वरना आपस की बात है कि क्वेश्चन को इतना मुश्किल था नहीं। जी बेटा जैनब, आपको मेरी बात समझ में आती है? ठीक है बेटा। अच्छा अब जैनब हम आपसे ही एक सवाल पूछ लेते हैं नेक्स्ट वाला, बल्कि जैनब से नहीं उसवा से पूछते हैं। उसवा बेटा इस क्वेश्चन को देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम अगले पेपर में आ गए। सेम ईयर है 2021, बट द नेक्स्ट पेपर इज जून, जनवरी के बाद जून। यू आर गिवन द वेट ऑफ सिलेंडर, you are given the volume of cylinder, and you have to calculate its density. So how do you calculate density? हमें पहले खुद से आंसर करके बताएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले खुद से बेटा आंसर कीजिए उसवा, ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है। इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही आपने बताया। ठीक है जी। यकीनन बाकी बच्चों ने भी कर लिया होगा, और बाकी बच्चों ने मेरे ख्याल में यूँ किया होगा कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस मास पर यूनिट वॉल्यूम में वॉल्यूम शुड रिमेन एज इट इज, and the mass is replaced by W upon G. Okay, this mass is replaced by weight upon G. Okay, and now if you put the values, then the answer is C. So it's simple question. And now this is another question in which this is a submarine, and submarine is below the surface of sea. Okay, you are given volume of submarine, the submarine is stationary, the density of seawater is given, and they are asking calculate upthrust. If the submarine is stationary, it means downward force equals to upward force. Abdullah beta, weight always act downward, upthrust always act upward. Abdullah ये बताइए, where will be drag force, upward or downward? Upward. If the submarine is stationary, there is no drag force, Abdullah bhai. Drag force depends upon speed. ठीक है बेटा? If the object is stationary, then no friction and no resistive force and no drag. Drag depends upon speed. Drag depends upon speed. No speed, no drag. अब्दुल्ला बताइए बेटा, ड्रैग कब नहीं लगता? जी, हम आपको याद कराना चाह रहे होते हैं बेटा। ठीक है ना, हम आपको इस तरह बात याद कराना चाह रहे होते हैं, इसलिए बात बता के आपसे पूछ लेते हैं, ताकि आई होप कि आप उसको याद रखेंगे आइंदा। ठीक है बेटा? तो हम लोग वी आर नॉट राइटिंग ड्रैग इक्वेशन, एंड राइट नाउ वी आर राइटिंग अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट। In this question, weight is mg, but we are not given mass. Sir, we are given volume of submarine and we are given density of sea water. हमें तो चाहिए मास। मास कहाँ से लाएंगे भाई? मास कहाँ से लाएंगे? द सबमरीन इज स्टेशनरी। अच्छा जी, वेट से नहीं आएगा, फिर मुझे लग रहा है ये रॉ जीबी से ही आएगा, बिकॉज वी आर गिवन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर। ओके, वी शुड राइट द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अपथ्रस्ट। नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अपथ्रस्ट इज रॉ जी वी। रॉ जी वी। ओके, रॉ is the density. The density of seawater is 1.03 exponent 3. It is density of seawater. Gravity is 9.8. H मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया।
The upthrust equation is rho GV. V is the volume of submarine. Volume of submarine is 5.83 exponent 3. So it is the normal equation of upthrust. ठीक है जी, कैलकुलेट कीजिए और अगर कोई बच्चा मुझे बता दे what is the answer. Rho GV. What is the word? Upthrust. What is upthrust? Equation of upthrust है, upthrust is 5.89 exponent 7 बना है. ठीक है, ठीक है बेटा. Density of, ठीक है बेटा, density is 1.03, gravity 9.8, volume is given. तो जनाब upthrust इतना आ गया. And now the question is calculate the mass of submarine. Now we are calculating mass of submarine. Sir, how can we calculate mass of submarine? So as I stated, sir, if the submarine is stationary, then weight and upthrust are equal. No drag is acting. Weight and upthrust are equal. No drag is acting. So weight is mg. Upthrust we have calculated. Sir, upthrust we have calculated. And we have to calculate mass. So this mass equals to 5.9 exponent 7 divided by 9.81, and I think if we divide this number, then the answer will be 6.0 exponent 6 kg. So weight equal to upthrust, and by this equation we have calculated the mass of the submarine. I think you are solving yourself. And now the next part is the submarine now moves into a region of sea where the water is less salty. If the saltness of water decreased, it means the density of water reduced. The density of water reduced. Consider this is submarine. You know weight remains constant. Weight is a constant quantity. Upthrust is also constant quantity, but upthrust depends upon density of water. Density of water. In the question it is given that the density reduced. Sir, if density reduced, it means upthrust decreased. And if upthrust decreased, then the question is, what happened to the submarine? Because submarine was stationary. In the beginning, it was stationary. But now, if the density of water is reduced, it reduces the upthrust. And if upthrust decreases, then obviously the submarine begins to sink. Submarine begins to sink. स्टूडेंट से बेटा हम पूछ के चेक करना चाह रहे होते हैं आप सो रहे हैं जाग रहे हैं. तो आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस एंड आस्किंग बेटा बनीन आपसे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं. बनीन बेटा गौर से सुनिएगा. सबमरीन जिस जगह पर है वहां पानी की डेंसिटी कम हो गई है. इफ द डेंसिटी रिड्यूस्ड it will decrease upthrust. If upthrust reduced, then obviously submarine begins to sink. जी बनीन हमें ये बताइए
अगर पानी की डेंसिटी कम हो जाए तो सबमरीन में क्या होने लगेगा? हाँ, ठीक है जी, जरा लिखिएगा बेटा इस बात को। अपथ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एज डेंसिटी reduces, upthrust decreases, and the keyword submarine begins to sink. Submarine begins to sink. And now there is a mathematical question. The mathematical part of the question is submarine alerts its weight by pumping water in or out of its internal tank. आपको पता है सबमरीन में टैंक होते हैं। टैंक में अगर हम पानी भर लेंगे तो सबमरीन भारी हो जाएगी, तो सबमरीन सिंक करने लगेगी। सबमरीन तो सर पहले से सिंक कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए सर? हमें पंप आउट कर देना चाहिए पानी। ठीक है जनाब। अगर टैंक में से पानी को पंप आउट कर दोगे तो मास ऑफ सबमरीन डिक्रीज, वेट ऑफ सबमरीन डिक्रीज, तो वो जो अपथ्रस्ट डिक्रीज हो गया वो उससे बैलेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही है कि कितना पानी का मास पंप आउट कर दूं ताकि जो सबमरीन है वो मेंटेन कर ले अपनी डेप्थ को। सबमरीन अपनी डेप्थ को मेंटेन करना चाहती है तो कितना पानी पंप आउट कर दें। ठीक है जनाब, ये आपने कैलकुलेट करना है, मैं कर दूंगा, आप लोग छापेंगे बेटा। पहले खुद से कोशिश कीजिए बेटा, खुद से पहले कोशिश कीजिए कि हम क्या करेंगे। और याद रहे कि अपथ्रस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। अपथ्रस्ट था 5.9 एक्सपोनेंट 7। अपथ्रस्ट था 5.9 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। और सबमरीन का अपना मास था 6 एक्सपोनेंट 6। ठीक है जी, सबमरीन का अपना मास 6 एक्सपोनेंट 6, ये मास है। ठीक है जी। अब पानी की डेंसिटी कम हो गई है सर, अब डेंसिटी कम हो गई है ना, डेंसिटी कम हो गई है तो अपथ्रस्ट कम हो गया। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट रिड्यूस्ड अपथ्रस्ट। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट reduced upthrust. ठीक, to calculate reduced upthrust I am using new density. So new density is this raw GV. ठीक है जनाब, it will be reduced density. Reduced density is 1.01 exponent 3, gravity 9.8, volume, sir, volume of the submarine was given in the first line of the question. It was 5.83. 5.83 exponent 3. So the new upthrust we have calculated, and the new upthrust is 5.78 exponent 7 Newton. This is new upthrust. This is new upthrust. The old upthrust was 5.9 exponent 7. Old upthrust
5.9 exponent 7, and new upthrust we have calculated right now. So if you calculate their difference, it will give you the difference of upthrust. If you subtract them, then the difference of upthrust will be 1.14 exponent 6 Newton. This is the change in upthrust. This is the change in upthrust. And you know, if upthrust is divided by 9.8, if the upthrust is divided by 9.8, it gives you mass. It gives you mass. So this is the mass which should be pumped out. Mass of water pump out is equal to upthrust divided by gravity. Upthrust divided by gravity. So the answer will be 1.17 exponent 5 kg. 1.17 exponent 5 kg. ठीक है जनाब? And this question you can solve by another method, in which for the new upthrust you can calculate new mass. You can calculate new mass because we have derived a new formula in this question. Mass of object equal to upthrust divided by gravity. Mass equal to upthrust divided by gravity. So by new upthrust you can calculate new mass, and this mass should be subtracted with the old mass. It is your choice. Okay. So I have solved the question according to the marking scheme. Sir, we calculated new upthrust with new density of water, and this new upthrust subtracted with old upthrust, it gives you the change in upthrust. And for this change in upthrust, you can calculate change in mass because we are pumping out water from the submarine. And upthrust divided by gravity, it will give you the mass of the water which should be pumped out from the submarine. ठीक, मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और मेरी बात रिपीट करने के बाद अब्दुल्ला मुझे बताएंगे मैंने क्या बोला. अब्दुल्ला गौर से सुनना. सर, इन दिस क्वेश्चन we have learned a new formula, a new approach in this question. Okay, if a submarine is inside water and maintaining its position, if it is maintaining its position, then obviously weight equal to upthrust. अगर सबमरीन को सर एक जगह रोक के रखना है, अगर सबमरीन को बेटा एक जगह रोक के रखना है, तो weight should be equal to upthrust. And by weight we can calculate mass. कैसे सर? अपथरस को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा. अब्दुल्ला सिर्फ ये बताइए, इस क्वेश्चन में हमने एक नया फार्मूला डिस्कस किया है. क्या फार्मूला सीखा है आपने? इसके अंदर क्या दिमाग बना रहे हैं अब्दुल्ला, हमें बताइए. अगर सबमरीन को एक पोजीशन पर रोकना है तो सबमरीन का वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट. ठीक है जनाब. सबमरीन का मास कैलकुलेट करना है तो मास होगा अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी. मास होगा अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी. अगर सबमरीन को सर एक जगह रोक के रखना है तो वेट और अपथ्रस्ट बराबर होगा और उस वेट में से सर हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं अपथ्रस्ट बाय ग्रेविटी. बट अब्दुल्ला बोलिए, मैंने 2-3 दफा बोल दिया आपके लिए एक बात. बेटा अब्दुल्ला, बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप सबमरीन को एक जगह रोक के रखना चाहते हैं तो सबमरीन का वेट और अपथ्रस्ट बराबर होंगे और उसमें से अगर आपने सबमरीन का मास निकालना है तो मास बराबर होगा अपथ्रस्ट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी. तो बेटा ये वाली बात बोल के बताइए अब्दुल्ला.
ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में सर क्या हुआ, आप गौर से सुनना, अभी गायब नहीं हो जाना अब्दुल्ला भाई। सर इस क्वेश्चन में ना सबमरीन जहां थी ना समंदर में, सर वहां पानी की डेंसिटी कम हो गई। सर अब पानी की डेंसिटी कम हो गई ना, तो डेंसिटी कम होने से अपथ्रस्ट कम हो गया। ठीक है बेटा, जब अपथ्रस्ट कम हो गया तो हमें सबमरीन का मास भी कम करना होगा। अगर सबमरीन का मास कम नहीं करोगे तो सबमरीन पानी के अंदर सिंक कर जाएगी। ठीक है। अब्दुल्ला, सिर्फ मुझे इशू बताएं इस सवाल में, सबमरीन के साथ क्या मसला आ गया समंदर में। जी सर, सबमरीन में क्या इशू आ गया समंदर में, जवाब। सर द डेंसिटी ऑफ वाटर इन सी वाटर डिक्रीज। सर व्हेन डेंसिटी डिक्रीज्ड, upthrust decrease, and now the submarine is sinking down। ठीक है जनाब। सबमरीन में क्या इशू आया हुआ है, सर सबमरीन समंदर में जहां है, सर वहां पानी की डेंसिटी कम हो गई है, पता नहीं कैसे कम हुई, डेंसिटी कम हो गई। सर डेंसिटी कम हो गई तो अपथ्रस्ट कम हो गया, अपथ्रस्ट कम हो गया तो सबमरीन ने सिंक करना शुरू कर दिया है। इट इज इशू। हाँ अब्दुल्ला, सिर्फ मसला बताएं क्या हो गया सबमरीन में। हाँ हाँ जी, ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन बेटा, ये लिखा हुआ है उसने ना, ये क्वेश्चन लिखा था कि सबमरीन जहां जा रही है वहां पे लेस सॉल्टी है, डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो क्या होगा। तो अभी आपने बताया बेटा कि ये डूब जाएगी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, सिमरा, सिमरा बेटा, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। नाउ द सबमरीन इज सिंकिंग इनटू द सी, व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन इट्स लेवल। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन इट्स लेवल। हमें क्या करना चाहिए ताकि वो सबमरीन ना डूबे। हाउ डू वी प्रोटेक्ट फ्रॉम सिंकिंग। बेटा सिमरा, सबमरीन में सर वाटर टैंक होते हैं। सबमरीन में वाटर टैंक होते हैं। उन वाटर टैंक में से हम वाटर को पंप आउट कर देंगे। सर अगर आपने पंप आउट कर दिया ना वाटर, तो सबमरीन बिकम्स लाइटर एंड इट विल नॉट सिंक। इट विल नॉट सिंक। इफ वी पंप आउट वाटर, the mass and the weight of the submarine will reduce, and then submarine will not sink into the water। हाँ बेटा, सबमरीन को किस तरह बचाएं, सिमरा हमें बताइए, हाउ कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम सिंकिंग द सबमरीन। या फ्रॉम, हाँ, यस, ठीक है ना। सबमरीन बिकम्स लाइटर एंड इट विल नॉट सिंक। ठीक है जी। उसके लिए जो कैलकुलेशन की है बेटा, वो कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दी है। आई थिंक कि आपने कैलकुलेशन समझ ली होगी। ठीक है जी। एंड नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन। दिस इज अनदर क्वेश्चन, और ये उसी ईयर का है, कोई ये किसी और ईयर का नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम ईयर। ठीक है जनाब, उसी ईयर का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहूंगा सारे बच्चों से, मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा पहले, पहले सारे बच्चे आप लोग खुद से करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।